Welcome back. So today we will discuss one of the article of today's newspaper. It is already too late today, and yesterday's newspaper did not come because of the Pongal holiday. So there was no the Hindu newspaper yesterday. So today's article, social equalizer, while promoting the digital payment, care is needed to guard against cyber threats. So this is a relevant topic when it comes to cybersecurity, when it comes to financial inclusion, mainly the topics of GS3 paper. Okay, so we'll look into the aspects. So basically this article is saying about the importance of digital infrastructure and the payment infrastructure and how it has increased significantly, majorly because of demonetization and the COVID. And a large number of fintech companies have swayed the market, and digital transactions have increased tremendously. Okay, so now in this RBI's vision of payment vision 2025, more push towards digital payment is required, is the idea. And how they are going to do that, one of the elements is foregoing the MDR. What is MDR? That is merchant discount rate. Okay, merchant discount rate. When you go to a shop, you swipe your card, debit card or credit card, what happens is your money gets debited, and but the shopkeeper has to pay certain interest on that amount of payment, because he is using that digital service, because he is using that service given by the bank. So that is a merchant discount rate. So that discount rate has to be given by the shopkeeper to the one who is providing the service. Okay, so that is MDR. By foregoing the MDR, more push for digital transactions can be made, because if the value of transaction is more, then often the shopkeepers resist in taking money from through online mode. Okay, so what are the components of MDR? That is the distribution of MDR rate. It belongs to 1 to 3%, basically the rate difference, and the rate is distributed as the bank who is providing the POS transaction, then the card network, which card that belongs to, and the issuing bank. The interest rate gets divided in these elements. So the government will pay in the lieu. Now what will happen, instead of MDR, the government is going to pay whatever the transaction amount is to the issuing bank, so that there is parity between the cash payments and the digital payments. And it will also help secure the data of so many users because of the cyber threats. So that is the whole idea of this article. Now we will read into it. Okay, so the Union Cabinet recent decision to earmark 2600 crores for providing banks with incentives to promote digital payment has focused attention on India's welcome push to broaden and deepen the alternatives to most widely accepted method of payment worldwide, cash. Now द ऑथर इज सेइंग कि यूनियन कैबिनेट ने अभी 2600 करोड़ का एक प्लान अप्रूव किया है, दैट इज़ टू प्रमोट द डिजिटल पेमेंट, एंड इट इज़ द आइडिया इज़ टू ब्रॉडन, यानी कि उसकी विड्थ को इंक्रीज़ करना और डीपन, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों उसके एरिया को इंक्रीज़ करना एज एन ऑल्टरनेटिव टू द मोस्ट एक्सेप्टेड पेमेंट मेथड. और मोस्ट एक्सेप्टेड पेमेंट मेथड क्या है? कैश. ठीक है, उसका एक ऑल्टरनेटिव देने का सोचा है. The Reserve Bank of India Payment Vision 2025 document observes that India payment system fosters economic development and financial stability. Now this is important. एक अच्छा सिस्टम जो पेमेंट सिस्टम है वो क्या करेगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करेगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा कंट्री को. ठीक है, there can be no two views that the rapid and widespread adoption of digital payment method, coupled with steps to bringing more people into banking system fold, has significantly helped cut the reliance on cash for low value transactions, especially in metros and cities. अब इस पे कोई दोहरा विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है. ये जो पुश था डिजिटल पेमेंट के लिए, ये रैपिडली इंक्रीज़ हुआ है, और इसने मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों को इस बैंकिंग सिस्टम के अंदर लेके आया है, और इसने जो लो वैल्यू कैश ट्रांजैक्शंस है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाया है, स्पेशली इन मेट्रो एंड सिटीज़.
At the heart of this payment revolution has been the National Payment Corporation of India (NPCI) and its UPI, that is Unified Payment Interface. The UPI's function as a linchpin transaction enabler. It is a linchpin. What is a linchpin? Linchpin is the most crucial element, most crucial, okay? Enabler has been key in under grinding this transformation. In December 2022, the total monthly volume of UPI facilitated transaction aggregated almost 73 crores with a value exceeding 12.8 lakh crores. While this is a 71% jump in the volume and 55% increase in the value from a year earlier, the UPI volume last month was close to 54 times the transaction in December 2017. जो लास्ट मंथ में यूपीआई का ट्रांजेक्शन 54 टाइम्स ज़्यादा था दिसंबर 2017 से. अ स्टैगरिंग 98.6% increase in the value seen in last 5 years. So the percentage of UPI transactions has increased enormously. Okay. The adoption of digital payment method while accelerated by the COVID pandemic, ये accelerate किससे हुआ? COVID की वजह से, has also been enabled by widening the number of banks which have backed the UPI system. अब जो यूपीआई सिस्टम को बैक कर रहे थे ऐसे बैंक्स का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, एज वेल एज इंडिजीनियस रुपए कार्ड एंड डेबिट कार्ड. जो रुपए टेक्नोलॉजी जो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा इंडिजीनियस है, तो इसकी वजह से भी यूपीआई बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है. अब वेल्टर, नाउ व्हाट इज़ वेल्टर? वेल्टर मतलब एक भवंडर, ओके, बहुत तेज़ी से जो आ रहा हो, ठीक है. इट इज़ अ लाइक यू कैन से इट्स too much of things coming into the picture of private financial technologies and fintech firms. अभी वेल्टर मतलब टू मच है ना, तो बहुत सारी फिनटेक कंपनीज इंक्रीज हो चुकी हैं दैट ऑफर्स टेलर मेड डिजिटल पेमेंट्स. अब जैसे आप देखो ईजी पे आ गया है, ठीक है, एंड और क्या क्या, मतलब बहुत सारे और जैसे लेज़ी पे, ठीक है, एंड वॉट एल्स इज नाउ यू कैन ऑल्सो सी फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन में आपको इंस्टेंट क्रेडिट मिल जाता है. तो these kind of they are tailored made now according to the need of the consumer. And big technology social media companies have added payment with a view to enhance stickiness with their core offering has also been the major enabler. WhatsApp पेमेंट है ना, सारे जो मीडिया प्लेटफॉर्म है वो अपना पेमेंट एनेबल कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस हैं. The banking sector, however, have been relatively disadvantaged in leveraging the payment ecosystem. जो बैंकिंग कोर सेक्टर है वो बिट डिसएडवांटेज पे है. क्यों? For its core business growth, as spending on infrastructure to support and secure such payments has been disproportionately higher. क्योंकि उनकी जो स्पेंडिंग है ना, वो जो लोन देते हैं वो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बड़ी बड़ी मतलब जो कंपनीज़ हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसके लिए वो लोन दे रहे हैं और वो लोन्स पे डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए लोन देना बहुत ज़्यादा हायर है, उनको रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं. एंड बट जो ये हायर इन द फिनटेक एंड बिग टेक राइवल्स, जो ये बिग टेक राइवल्स हैं ये ज़्यादा रिटर्न्स दे पा रहे हैं. द गवर्नमेंट्स न्यू इंसेंटिव aims to level the field by offering the payment in lieu of commissions foregone by the lenders in waiving the merchant discount rate they would have otherwise levied. अब गवर्नमेंट क्या करेगी, जो MDR जो शॉप सेलर को देना पड़ता था, ठीक है, लेंडर को जिसने मशीन इंस्टॉल करी है वो फॉरगो कर देगी, वो गवर्नमेंट देगी उनको, वो इंसेंटिव की तरह देगी गवर्नमेंट उनको, इंस्टेड वो शॉपकीपर से लें ताकि शॉपकीपर ज़्यादा इंसेंटिवाइज हो लोगों को डिजिटल पेमेंट करने के लिए, ठीक है. Still, challenges abound. Policymakers need to urgently ring-fence the wealth of the individual spending data being generated and constantly enhance security to safeguard the payment system from cyber threats. अब ये ring-fence का मतलब क्या होता है? safeguard, है ना, कि उसको safeguard कर लिया जाए जल्दी से जल्दी जो डाटा है, क्योंकि साइबर थ्रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है. So this was a small article. Thank you so much. Have a nice time.